people, welcome back to the another lecture series on plant genetics. So, today we are going to discuss about position effect on chromosomes. So, what is position effect? Position effect represents a change in the function of a gene due to its position in a chromosome or in the homologous chromosome. A position effect do not represent a change in the primary structure of gene, but it affect the functions of its. It also known in yeast, neurospora, maize, oinothera, drosophila, mice, human. There are various cases of position effects are there, like variegated position effect, cis transposition effect, duplication position effect. So today we are going to discuss about variegated position effect. Variegated position effect. It involves the heterochromatization which prevents transcription of concerned gene. Heterochromatization is less active in transcription. Basically, heterochromatins and euchromatins are two different segments or regions on chromosome. Heterochromatins are that chromatin which are very closely or tightly packed and that unable to transcribe itself. Here there are very few number of gene that can transcribe itself, so it is basically functionless. And euchromatin, that is also known as the true chromatin, where it is lightly stained, or there are many genes, all the genes can transcribe and they are functional genes. So heterochromatization is less active in transcription and it has more repetitive DNA sequence than euchromatin. Heterochromatin is located in specific position, generally near the centromere and telomere of different chromosome. Such heterochromatin is termed as constitutive heterochromatin. When a euchromatin segment is present near the heterochromatin, it is called as facultative heterochromatin. So, example of variegated position effect. Molted eye mutant in Drosophila. So, what is molted eye? This is the condition where the eye fails to develop properly, resulting in mosaic or molted appearance rather than the normal fully formed compound eye. So molted eye is basically a undeveloped type of eye in Drosophila. This is basically a condition. So W plus gene of Drosophila located on C3C2 band of X chromosome near the tip of the left arm that responsible for the production of dull red eye color. When the paracentric inversion takes place in 3C2 band of near or within the heterochromatic region close to the centromere, a molten eye color is resulted. The molten eye mutant does not involve a change in the base sequence of W plus gene. So basically यहाँ पे हो क्या रहा है? मोल्टेड आई इन ड्रोसोफिला. मोल्टेड आई क्या होता है? जो एक अनडेवलप्ड टाइप ऑफ आई होता है उसे हम मोल्टेड आई बोलते हैं. दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग. सो ये आई कलर आता कैसे है ड्रोसोफिला में? एक जीन होता है W प्लस जीन जो कहाँ लोकेटेड होता है? एक्स क्रोमोसोम के 3C2 बैंड पर, जो कि लेफ्ट आर्म के टॉप पोजीशन पे होता है. That is responsible for the production of dull red eye color. Clear? Then क्या होता है? एक paracentric inversion होता है 3C2 बैंड के पास,
जो कि लाई करता है एक हेटेरोक्रोमेटिक रीजन पे या फिर हेटेरोक्रोमेटिक रीजन के पास। सो क्लोज टू द सेंट्रोमियर के पास होगा। हेटेरोक्रोमेटिक के अंदर आएगा या फिर हेटेरोक्रोमेटिक रीजन के पास। जब 3C2 बेंड में पैरासेंट्रिक इन्वर्जन होगा तब उससे बनेगा मोल्टेड आई इन ड्रोसोफिला। The molten I mutant does not involve a change in the base sequence of W plus gene. Here जो molten I के म्यूटेंट होंगे उसमें कोई भी बेस सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा। मीन्स हर जीन के कुछ बेस सीक्वेंसेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस पेयर्स होते हैं, तो जो सीक्वेंस होगा उस जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। बट क्या होगा, जो पोजीशन में चेंज हुआ है उसकी वजह से एक आई कलर में चेंज आएगा और मोल्टेड आई बनेगा। दैट्स ऑल। देन परम्यूटेशन. Permutations refers to a change in functions of an allele of a structural gene. Permutable allele that may last for several generations and is induced by the presence of the same nucleus with another allele, the permutagenic allele of the gene. The permuted state of an allele is induced by the permutagenic allele, while the recovery in the permuted allele is spontaneous. So, permutation. Permutation refers to a change in functions of an allele of a structural gene. So, एक structural gene के एलील्स जो होते हैं, जीन होता है, जीन के फॉर्म्स होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिसे हम एलील्स बोलते हैं। तो एक स्ट्रक्चरल जीन है जिसके एलील्स भी होंगे। हर स्ट्रक्चरल जीन्स के एलील्स होते हैं, तो जीन्स के एलील होंगे। जो एलील होता है, एलील के फंक्शंस में, एक स्ट्रक्चरल जीन के एलील के फंक्शंस में जो चेंजेस होता है उसे बोलते हैं परम्यूटेशन, और उस एलील को बोलते हैं परम्यूटेबल एलील। ये क्या हो सकता है, ये कुछ जनरेशन तक भी रह सकता है एंड इंड्यूस्ड भी किया जा सकता है बाय द प्रेजेंस ऑफ सेम न्यूक्लियस विथ अनदर एलील, द परम्यूटाजेनिक एलील ऑफ जीन। इसे इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं। कैसे? सेम न्यूक्लियस में अनदर एलील को लेके जो कि परम्यूटाजेनिक एलील होगा उस जीन का, इसे इंट्रोड्यूस्ड कर सकते हैं हम लोग। सो बेसिकली परम्यूटेशन क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन के एलील के फंक्शंस में चेंज लाने को परम्यूटेशन बोलते हैं, और उस एलील को बोलते हैं परम्यूटेबल एलील। एंड जीन को और जब इंड्यूस्ड करते हैं तो उसे बोलते हैं परम्यूटाजेनिक एलील। द परम्यूटेड स्टेट ऑफ एन एलील इज इंड्यूस्ड बाय ए परम्यूटाजेनिक एलील। परम्यूटेड स्टेट को जब इंड्यूस्ड करते हैं तो उसमें लगता है एक परम्यूटाजेनिक एलील, while the recovery in the permuted allele is spontaneous, जबकि उसका रिकवरी एक spontaneous process होगा। So that's all, and thank you for listening.